सकते हैं जो भी एक्सटर्नल आपका माइक होगा वो आपको यहाँ पर इस तरह से दिखाई देगा। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करते हैं, ऑडियो मिक्सर के नीचे आप देख सकते हैं ऑडियो इनपुट कैप्चर का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो टाइमलाइन है, यहाँ पर जितने भी ऑडियोज हैं आपके लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के, वो सभी यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। जो आपको म्यूट करना है, जिसे आप रखना चाहते हैं उसे आप रख सकते हैं। जब दोस्तों आप सीन और सोर्सेस ऐड कर लेते हैं और OBS स्टूडियो के अंदर सभी सेटिंग्स को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपको स्टार्ट स्ट्रीमिंग के ऊपर क्लिक करना होता है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं वैसे आपके यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीम होना वो स्टार्ट हो जाती है। मैंने दोस्तों बस आपको तरीका बताया है, बाकी आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। जिस भी तरह की आप लाइव स्ट्रीम करना चाहते हैं, इन सभी फीचर्स को आप यूज करके यूट्यूब पर आप लाइव स्ट्रीम को कर सकते हैं। अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में वीडियो चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करिए, नेक्स्ट वीडियो मैं उस टॉपिक पे बना दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में जरूर से शेयर करिए। अगर आप अपने मोबाइल फोन को OBS स्टूडियो में एज ए वेबकैम यूज करना चाहते हैं तो ऊपर वाला वीडियो देख सकते हैं। अगर आप OBS स्टूडियो से स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना सीखना चाहते हैं तो नीचे वाला वीडियो देख सकते हैं। अगर आप पहली बार देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल को तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। 2026 में अगर आप भी स्ट्रीमिंग करना चाहते हो लेकिन आपकी स्ट्रीम्स एक व्हाट्सएप वीडियो जैसी ब्लरी दिखती है, तो आओ मैं तुम्हें बताता हूं कि आप नेटफ्लिक्स जैसी हाई क्वालिटी स्ट्रीम्स कैसे कर सकते हो। मैं पिछले 9 साल से यूट्यूब पे स्ट्रीम्स कर रहा हूं, तो मैंने OBS के हर अपडेट को देखा है और हर तरीके के ग्राफिक कार्ड के ऊपर मैंने स्ट्रीम्स किया है। तो चाहे आपके पास किसी भी ब्रांड का ग्राफिक्स कार्ड हो, चाहे वो बजट GPU हो या एक हाई एंड GPU, सबके लिए मैं आपको बेस्ट OBS सेटिंग्स इस वीडियो में बताऊंगा, तो इसे एंड तक जरूर देखना। ऑलराइट, तो ये है हमारा OBS और हमें जो सेटिंग्स करनी है उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे सेटिंग्स टैब के अंदर। और सबसे पहले कुछ बेसिक सेटिंग्स यहाँ पे सबकी क्लियर होनी जरूरी है बिफोर वी डू एंड आवर ऑप्टिमाइजेशन। सबसे पहले तो एडवांस सेटिंग्स में हम जाएंगे और यहाँ पे हमारा जो प्रोसेस प्रायोरिटी है OBS का, उसे नॉर्मल के बजाय अबव नॉर्मल करेंगे। इससे ये मेक श्योर होगा कि आपका जो स्ट्रीम है और आपका जो OBS रिसोर्सेज कंज्यूम कर रहा है वो इनफ रहे, ताकि आपको एक अच्छी अनइंटरप्टेड स्ट्रीम आप आउटपुट कर पाओ। बाकी रेंडरर में यहाँ पे DirectX 3D 11 ये सबसे स्टेबल है, तो इसे कुछ छेड़ना नहीं है। कलर फॉर्मेट में यहाँ पे NV12 आपको दिखेगा, उसे वैसा का वैसा रखना है। कलर स्पेस Rec 709 आप रख सकते हो। कलर रेंज को लिमिटेड रखना, ज्यादा आपको यहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद हम आएंगे वीडियो टैब के अंदर और यहाँ पे आपको 2 रेजोल्यूशन दिखेंगे, एक बेस कैनवस रेजोल्यूशन और एक आउटपुट स्केल रेजोल्यूशन। तो अगर आपका मॉनिटर 1080p है जिसपे आप 1080p पे गेम्स रन कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे बेस कैनवस रेजोल्यूशन को 1080p ही रखना है। अगर आपका 2K मॉनिटर या 4K मॉनिटर है तो आपको यहाँ पे वो रेजोल्यूशन को सिलेक्ट कर लेना है, या तो आप टाइप भी कर सकते हो। उसके बाद अब आता है आउटपुट स्केल रेजोल्यूशन। अगर आप 1080p पे स्ट्रीमिंग करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे 1920x1080 ही इसे रखना है, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल आप अपनी जो नॉर्मल 1080p स्ट्रीम्स है उसको 2K में अपस्केल करके स्ट्रीम करना चाहते हो, उसका भी एक रीजन है, क्योंकि अगर आप 2K पे अपस्केल करके YouTube पे स्ट्रीम करते हो तो YouTube आपकी स्ट्रीम्स को कंप्रेस कम करता है। फिर भले चाहे आपका गेम 1080p पे रन कर रहा हो, बट आपका जो गेम है 2K पे स्ट्रीम करने पे थोड़ा ज्यादा बेटर क्वालिटी यहाँ पे रिटेन करेगा। तो ये कंप्लीटली पर्सनल चॉइस है, मैं 2K पे करता हूँ, बट आप चाहो तो फॉर दिस वीडियो आप 1080p से स्टार्ट कर सकते हो। एंड बिकॉज वी आर नॉट चेंजिंग द रेजोल्यूशंस, यहाँ पे हमारे दोनों रेजोल्यूशन सेम है। डाउन स्केलिंग फिल्टर यहाँ पे हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप करना चाहो तो बाई लीनियर आपको सिलेक्ट करना है। FPS वैल्यूज को हम 60 पे रखेंगे क्योंकि हम एक 60 FPS का स्ट्रीम करना चाहते हैं। उसके बाद आपको स्ट्रेट अप आना है आपके स्ट्रीम सेक्शन में। अगर आप ट्विच पे स्ट्रीम करना चाहते हो आपको यहाँ पे ट्विच सिलेक्ट करना है, वरना जैसे आप मेरी तरह यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम करना चाहते हो तो यहाँ पे यूट्यूब RTMPS को आपको सिलेक्ट करना है और उसके बाद आप यहाँ पे स्ट्रीम की डाल के अपना यूट्यूब अकाउंट सेटअप कर दीजिएगा। उसके बाद आती है हमारी मेन सेटिंग्स। तो अब आपको यहाँ पे आउटपुट मोड में जाके एडवांस सिलेक्ट करना है इंस्टेड ऑफ सिंपल, क्योंकि इससे आप काफी सारे ऑप्टिमाइजेशन एंड सेटिंग्स के साथ खेल सकते हो। अब मेन जो आपका खिलाड़ी है ना, कि जो कंट्रोल करता है कि आपकी स्ट्रीम कितनी बढ़िया दिखेगी, तो वो होता है आपका वीडियो एनकोडर। अब यहाँ पे आपको सिलेक्ट कौन सा करना है, यहाँ पे बहुत सारे वेरिएंट है। अगर आपके पास कोई पुराना ग्राफिक कार्ड है RTX 4000 सीरीज से नीचे का या RX 7000 सीरीज के नीचे का, इसमें मैं रेकमेंड करता हूँ आप H.264 ही करें। ये सबसे स्टेबल एनकोडिंग फॉर्मेट है एंड ये बेसिकली हर चीज में कंपैटिबल है। लेकिन अगर आप थोड़ी ज्यादा हायर क्वालिटी पे स्ट्रीम करना चाहते हो, अच्छे डिटेल्स, आप कम बिटरेट पे ज्यादा क्वालिटी रिटेन करना चाहते हो अपने स्ट्रीम पे, तो एक AV1 करके एनकोडर आता है जो कि RTX 4000 सीरीज के बाद आपको देखने को मिलता है। या फिर अगर आपके पास AMD GPU है तो आपको RX 7000 सीरीज के जो Radeon GPUs है उसमें AV1 का भी ऑप्शन दिखेगा। तो अगर आप हाई क्वालिटी पे और भी ज्यादा स्ट्रीम करना चाहते हो देन गो चूज द AV1। यहाँ पे एक चीज याद रखना, आपके पास कोई भी GPU AOM और SVT AV1 ये दोनों आपको सिलेक्ट नहीं करना है, ये दोनों रिलायबल एनकोडर्स नहीं है।
अब मैं आप लोग को बता देता हूं कि ये H.264, HEVC और AV1 बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग साउंड करेगा, लेकिन इतना है नहीं। बेसिकली आपका स्ट्रीम तो जो है वो MP4 फॉर्मेट में ही जाता है, लेकिन उस MP4 को एनकोड करने के लिए यहाँ पे 3 एनकोडर ऑप्शंस मिलते हैं, H.264, HEVC और AV1। तो इन 3 एनकोडिंग फॉर्मेट से आपको कौन सा चूज करना चाहिए वो मैं आपको समझाता हूं। तो जो H.264 है वो सबसे पुराना एनकोडर है और सबसे सेफेस्ट एंड वाइडली कंपैटिबल एनकोडर है, लेकिन H.264 में आपको क्वालिटी का थोड़ा सा लिमिटेशन देखने को मिलता है। और जो AV1 है वो सबसे लेटेस्ट एनकोडर है और उसमें आपकी क्वालिटी कम बिटरेट पे भी बहुत ज्यादा रिटेन होती है। तो अगर मान लो आप 20,000 kbps पे H.264 का स्ट्रीम कर रहे हो वर्सेस अगर आप एक AV1 पे 13,000 या 14,000 की बिटरेट पे स्ट्रीम करते हो, तो AV1 की क्वालिटी जो है H.264 से बेटर निकल के आती है। लकीली YouTube AV1 एनकोडर सपोर्ट करता है, तो अगर आप मेरी तरह YouTube पे स्ट्रीम करना चाहते हो तो आप AV1 एनकोडर को यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद बात आ जाती है रीस्केल आउटपुट की। इसे हमने जो यहाँ पे आउटपुट रेजोल्यूशन सेट किया था उसी पे हमें सेट कर देना है। तो अगर मैं 1080p कर रहा हूं तो मुझे रीस्केल आउटपुट की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैंने 1080p सिलेक्ट करके रखा है, सिंस हम लोग कोई रेजोल्यूशन में फेरफार नहीं कर रहे। अगर आप अपस्केल करके 2K पे स्ट्रीम कर रहे हो तो यहाँ पे आपको बाइलिनियर या बाइक्यूबिक के बीच में चूज करना है। बाइलिनियर जो है वो कम जीपीयू यूज करेगा, बाइक्यूबिक थोड़ा सा ज्यादा जीपीयू यूज करेगा लेकिन क्वालिटी इंप्रूवमेंट देगा। उसके बाद आते हैं एनकोडर सेटिंग्स। यहाँ पे आपको रेट कंट्रोल में CBR को सिलेक्ट कर देना है। ये बेसिकली आपकी जो बिटरेट आप एक सेट करोगे उसी बिटरेट में आपके वीडियो की बैंडविड्थ चलेगी। फिर आ जाता है बिटरेट। तो बिटरेट अगर आप 1080p पे स्ट्रीम कर रहे हो तो आपको 8,000 से लेके 12,000 के बीच में रखनी है। उससे कम करोगे तो क्वालिटी ड्रॉप होगा, उससे ज्यादा करोगे तो आपका स्ट्रीम जो है वो यूट्यूब सर्वर्स पे ज्यादा बफर करने लगेगा। तो और अगर आप 1440p रेजोल्यूशन पे स्ट्रीम करना चाहते हो तो आप 12,000 से लेके 18,000 20,000 तक की भी बिटरेट अपने हिसाब से रख सकते हो। बट मेरे हिसाब से 1080p के लिए अगर आप बिगिनर लेवल के स्ट्रीमर हो तो मैं आपको 8,000 बिटरेट रेकमेंड करूंगा, और 1440p पे अगर आप स्ट्रीम कर रहे हो तो यहाँ पे 15,000 की बिटरेट रेकमेंड करूंगा। उसके बाद जो प्रीसेट है ये बेसिकली डिसाइड करता है कि आपका स्ट्रीम आपके गेम पे लोड लेगा या नहीं। तो अगर आपके पास एकदम पोटैटो कंप्यूटर है और आप ट्राई करना चाहते हो स्ट्रीमिंग, तो मैं रेकमेंड करता हूं ये फास्टेस्ट के साथ ट्राई करो। ये आपके जीपीयू पे सबसे कम लोड होगा और सबसे खराब क्वालिटी भी देगा। फॉर बिगिनर्स मैं रेकमेंड करता हूं आप यहाँ पे स्लो गुड क्वालिटी के साथ ट्राई करो। और अगर थोड़ा सा मिड रेंज कार्ड है जैसे 3060 Ti हो गया, RX 7600 या ऐसा कोई सिमिलर कार्ड हो गया, तो आपको यहाँ पे स्लोअर में भी दिक्कत नहीं आएगी। फ्लोअर पे आपको बहुत अच्छी क्वालिटी मिलती है एंड मैं पर्सनली यही प्रीसेट यूज करता हूं, तो मैं रेकमेंड करता हूं आप भी ये चेक करो। अगर स्लोअर पे आपकी स्ट्रीम बहुत ज्यादा स्मूथ चल रही है एंड आपके पास एक थोड़ा सा हाई एंड जीपीयू है तो आप यहाँ पे एक स्लोएस्ट बेस्ट क्वालिटी के साथ भी जा सकते हो। प्रोफाइल को आपको रखनी है हाई पे और यहाँ पे लुक अहेड और साइको विजुअल ट्यूनिंग ये दोनों ऑप्शंस आते हैं। तो अगर आप सिंगल पीसी स्ट्रीमिंग कर रहे हो ना तो मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप ये दोनों ऑप्शंस को अनचेक ही रखो। एंड अगर आप समझना चाहते हो क्या करते हैं तो लुक अहेड का सेटिंग है वो बेसिकली आपकी जीपीयू की यूटिलाइजेशन बढ़ा देगा, ये प्रेडिक्ट करने के लिए कि आपका नेक्स्ट फ्रेम गेम में क्या होगा ताकि आपको एक बेटर क्वालिटी मिल सके। इसकी मोस्टली लोगों को जरूरत नहीं होती। उसके बाद आता है साइको विजुअल ट्यूनिंग। ये भी बेसिकली एक तरीके से आपके हाई मोशन इंटेंसिटी वाले सिचुएशंस में जो आपने नोटिस किया होगा थोड़ा सा ब्लरी दिखता है स्ट्रीम जब हाई मोशन आता है, तो वहां पे अगर आप साइको विजुअल ट्यूनिंग ऑन करोगे जीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा और ब्लरीनेस थोड़ी कम हो जाएगी। बट अगर आप AV1 पे स्ट्रीम कर रहे हो तो इसकी आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है एंड मैं बोलता हूं फॉर बिगिनर्स इसे ऑफ ही रखो। फिर आ जाती है बात जीपीयू और मैक्स बी फ्रेम्स की। फिर जीपीयू को हम लोग यहाँ पे 0 पे ही रखेंगे एंड मैक्स बी फ्रेम्स को हम लोग 2 पे ही रखेंगे क्योंकि ये सबसे स्टेबल सेटिंग है। तो मैं रेकमेंड करता हूं कि आप लोग ये सेटिंग्स को टेस्ट कर लीजिएगा कि कौन से सेटिंग्स पे आपको सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रीम देखने को मिल रही है और आपके FPS भी गेम के ड्रॉप नहीं हो रहे। बट फॉर मोस्ट पीपल आई थिंक अगर आप इसे स्लोअर पे रखेंगे एंड 1080p पे बिटरेट 12,000 का रखेंगे तो आपका स्ट्रीम एकदम हाई क्वालिटी चलेगा। एंड एक प्रो टिप दे देता हूं, मैं मोस्ट स्ट्रीमर्स को यही रेकमेंड करता हूं कि आप 1080p पे आउटपुट करने के बजाय आप 1440p पे यूट्यूब पे आउटपुट करें, क्योंकि यूट्यूब पे जब आप एक 1440p पे स्ट्रीम आउटपुट करते हो तो वहां पे आपको एक VP9 एनकोडर मिलता है जिसका कंप्रेशन काफी ज्यादा कम, इसमें बहुत कम होता है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग इट और आपके शायद ये काम आया हो। तो अगर आपको OBS स्ट्रीमिंग या टेक रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट्स में डाल दीजिएगा एंड आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस इन माय नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, अगर आप देखना चाहते हो मेरी स्ट्रीम क्वालिटी कैसी दिखती है तो आई स्ट्रीम एवरी डे एट 4 PM ऑन यूट्यूब, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। His drill, his fitness drill, the way he gets ready for a game to young cricketers makes a huge difference to them. Yeah. So Dhaliwal was with the Surrey Jaguars. Sunil Narayan was there with them. So was this one. So was Marcus Stoinis. So that's a kind of
dressing room you have. Similarly, Yuvraj, who's he playing with? You know, he has Richie Berrington in his room, in the same room as him. He had the Dipender Singh Airi. So a lot of these other associate countries also play together. So it's really important for that to happen. The only problem with Canada is that the weather and the stadium out there, those are all drop-ins. So it's very difficult to sort of make really good pitches. Yeah, they do have to deal with a lot of these handicaps. Since Joy mentioned a lot of these big stars go and play these leagues, youngsters from associate nations perhaps just have to be like a sponge, right? Absorb all that you see. You don't always need to be told. Sometimes just observing big stars can help. If you're anything else, then there's a big problem with you. Sure. If you're not a sponge. Yeah. Because what happens with all the cricketers, and I can tell you from time immemorial, is that you have stars whom you've idolized. Sure. You have stars whom you sometimes don't even are scared to even say a word to. But you think of even county cricket. England was the country which was the origin of this game. But even in county cricket, when the overseas players came, they were expected to impart knowledge. In spite of England having been the mother of cricket. You think of IPL, what IPL has done. Look at how our own Indian players, India, you say, oh, we've got so much talent. But Joyda is proof here. We had some wonderful stars. Imagine a Chris Gayle asking a question in a meeting to Ricky Ponting. Can you imagine? I hope he remembers that. Chris Gayle asked a question to Ricky Ponting when we were sitting in a meeting about his preparation. How does he go about it? If he fails, what happens? Does he tweak something? So imagine, if it's even the experienced stars. I can give you a simple example. When I did the 2011 World Cup, I was working with Imran Khan, Viv Richards, Sir Alan Border, Chris Keynes. The 2 months were an absolute education. And I told my wife, I'll be coming home late. Don't bother me because this is what it is. This is what nobody is a complete cricketer. I suppose even Sir Garfield Sobers is still learning something from somebody in spite of having been the greatest all-rounder. So it takes away that sort of a feeling that, oh, can I approach him? That intimidation it goes away. The awe factor goes away. You are a very, very different kid when you come out the next time you come out to play. Yeah. So all these leagues, all these interactions, and as Joyda said, imagine you see a live Ricky Ponting in action or a Chris Gayle or just giving out names, Sachin Tendulkar, how he prepares. If leagues didn't happen, it's only the Indian team players and the Bombay team players who are exposed to what Sachin does. But imagine in a Mumbai Indians team or any other setup, there is Sakshat God for them and he is getting ready. He prepares. He's there with his pads on. Rahul Dravid. You name them. Our game is so full of stars and so full of these wonderful cricketers. Yeah. We have all learned from them. Everybody learns from somebody. Yeah. And I think that is one of the reasons why it's such a beautiful game. And that's one of the reasons why you've got such confident cricketers coming out. Those times where, oh, we have to go on a different trip. Can I even say hi to Sir Viv? Those days are gone. Sir Viv is your mentor. You're actually going up to him and you're like a thirsty kid who wants to grab everything that you can latch on to. So wonderful to see all these people come. And that's possibly why the gap is also being bridged. Yeah. You can see how associates are playing so well because of the fact that awe factor is gone. It's no longer the big brother. I'm as good. The little brother is as good. Or the smallest brother is also as good. Yeah. I'm glad you say this because I remember this wonderful video that the ICC put out on Instagram with the master Sachin Tendulkar talking to the Afghanistan team at the Wankhede, and everyone in that Afghanistan camp had their jaws dropped and they were looking at him like there was magic happening with Sachin talking to them. The Afghanistan team had a terrific 2023 ODI World Cup. It was only Maxwell that stopped them in that game at the Wankhede. But Jonathan Trott, who is taking them through in the last 3 or 4 years, this is going to be his last game as well as the head coach. He certainly has had an impact on how Afghanistan have played at the big level. No, he's been fantastic and he's been really, really good because what he's bought is that Afghan cricket was always brave cricket. We'll go there, we'll fight. And what he's done is he's brought a certain amount of thought process into it. He's brought a certain amount of discipline into it. And he's brought a certain amount of technology, if I use the word technology and this thing into saying, okay, your balls, you're bowling here, he's hitting you here. Those kind of things they're not very Afghan. Afghans go out there and play and bash the ball and, just beat strong people, yeah. Yeah. So here he brought the science into their game and he's done a fantastic job. And to be honest with you, I'm also happy that he's moving on because
it's very difficult for a coach, unless your name is Alex Ferguson, to give you 20 good years. Sure. A coach will come here, give you 5, 6, 7, 8 good years. Then now you need another coach to take you on a different level, take you on the next journey. Sometimes a new phase, slightly new tactics will help. So I'm not necessarily all the time. Not necessarily all the time. We have been privy to. Yeah, we've been privy to that as well. Finishing sixth at the 2023 World Cup is certainly part of this Jonathan Trott legacy that's helped South African cricket. They were semi-finalists at the T20 World Cup as well, which Karthik mentioned. Now, at that World Cup, it's not a team that any other team takes lightly. Karthik, how would you describe this legacy and the kind of impact this man has had on this team? I think I concur with exactly what Joyda has said. And also just think about it. They are naturally very powerful people. But there's been, as he said, science. Because one of my friends was their SNC. And he talked about how much Jonathan Trott is into the team and how much they have planned well in advance. That professionalism which you need to take them to the next sort of a step, or just to guide them, to put them on the right path. What does a coach do? Yes, he helps you in a certain way. I always keep saying he's a father figure, because there are times where you want to go and feel safe in his presence. You want to go and give whatever you feel to him, so that it's pretty transparent, and it's only him who knows it. It's like an lawyer sort of a relationship where privilege. It's privileged. Sometimes you want to open up, and that's why I said father figure. Father is never going to go and say anything to anyone else. Yeah. So you want a coach like that, and we've been blessed that we've had a few coaches. I've had a few coaches like that, where you could fight with them, and the wall wouldn't know. That is the kind of person you want. You want somebody to be pretty hands-on with things, pretty open with the communications, and that I'm a big believer in that. Open lines of communication go a long way in making secure teams, good and secure teams. So I think, I suppose he's done all of that. And Joyda is absolutely right. Beyond the point you feel slightly jaded, there's only 1 + 1 can only be 2 for as long. Yeah. You can't make it 1 + 1 can be 11. Yeah. So things like that. So I think he has done that. He wants to move on. Their cricket is certainly on the ascendancy, and the big brother of this team, Rashid Khan, had some wonderful words to say as well. As Jonathan Trott says goodbye, he said he has been someone who's taken Afghanistan cricket where it is now from where they were. He's worked so hard with these guys, every single one of them. He played a main role while taking this team on the right path. Have to remind ourselves, Joy, that this is a country that has no real domestic structure. So we have to appreciate where they are. No domestic structure. Their practice grounds, they've used Lucknow, they've used Noida. They play matches out here. Yeah. How difficult is it to get? And the point is not just about, domestic structure. It's about the team can come here. What about the talent out there? Where are they getting? Yeah. So it's very difficult for them to do. And I think they're doing an amazing job for the kind of country. I was talking yesterday about the whole Nepal business, where, the mountainous part of Nepal, it's very difficult to get grounds there. So most of the grounds are actually in the plains, in the Terai. So again, Afghanistan is all mountain. Yeah. So it's a very, very difficult task for them. Interesting one. They'll want to finish this off with a win, and perhaps a little gift to Jonathan Trott wanting to end his tenure on a high. Canada have won the toss and they've chosen to bowl first. A quick reminder of the 11s of both teams. Only one change for Afghanistan. That's Abdullah Ahmadzai, the right-arm pacer, has come in. And as far as the Canadians are concerned, they will be hoping for some magic from young Yuvraj Samra as well. He hit 100 against the Kiwis. Right here in Chennai, in comes Kalim Sana as well. Joy, terrific story. Kalim Sana comes from Pakistan. He was once a part of Pakistan's under-19 World Cup side, which had the likes of Babar Azam, Ahmed Shehzad, Mohammad Amir. He also played for the Pakistan Customs team when he was 15 years old, and then a back surgery where he had his L4 and L5 fracture, and then he sort of almost gave up until he found Indians in Canada and he came back to cricket. What a great story. No, it's great. I mean, and that area, I told you, that's at Brampton, Greater Toronto area. There are so many clubs. There are about 100,000 registered players just in that area. And so there's a whole move of cricket out there, and it's a there are basically three large, there's actually four, Indians, Pakistans, Sri Lankans, now growing Nepali population, and a lot of West Indians as well. So the original Canadian team, in fact, their coach is Ingleton, okay, he's also Canadian, so he's also West Indian origin. So you have that mix, Yeah.
So, and that's what makes these teams so attractive, because there's a bit of that craft of the subcontinent and the It power looks- of both USA and Canada look like India A and India B. As I joked the other day, this performance should encourage America should be lenient on H-1B visas. Like, bring more people, because we have a lot of talent. And one of those talents, Navneet Dhaliwal, is being given a guard of honor by the Canadian team. He also plays his last game and he wants to get into coaching as well. Lots and lots of stories, but unfortunately we've run out of time. Just enough time, Joy, to give our viewers Joy Factor for night. Yeah, let's have a look. Should I turn my face? So Brendan McCullum, Chris Gayle, Craig Williams and Ibrahim Zadran are joint second on this list with a host of other players. Who is the first and what is the record? This is a T20 record, and I can tell you the person who's first, I'll give a hint, has played or is playing today. So if you take that makes you have a choice of about 48 cricketers. I only know NRD's record. That is the only record I can hear. Is it the number of teams they've played against? Maybe. Why don't find out? Google it and we'll give you the correct answer and the winner's name at the end of our coverage tonight. Predictions, gentlemen. Afghanistan batting first. You go first. 184. Joyda? I have nothing. You first. Okay, I'm going 195. 195 is high for me. 191. Quite close. We could all win. Let's see. Maybe that'll happen. Let's see if it does happen. Enjoy the first 10 overs and then come back and join us on Crickbuzz Combox at the 10 over mark. Bye-bye. Hello and welcome back to Crickbuzz Live. I'm Sayumi Kher. Pakistan have come out with flying colours in this pressure game that they had against Namibia. They decided to bat first, scored 199 runs thanks to Sahibzada Farhan's 100, and in return, Usman Tariq 4 for 16 in his 3.3, Shadab Khan 3 for 19 in his 4 were too good for Namibia as Pakistan have won by 102 runs. I'm back with the two left-handers in the house. A very, very happy Murli Karthik and Zahir Khan. Welcome back, gentlemen. Easy peasy for Pakistan. There was lots of pressure on them, Karthik. We spoke about them. They have now got that Q next to their name, but a very, very clinical win for them. Yeah, absolutely well put. You said they were too good, and that's exactly what they were. Before the show, we said man to man, they're a better side, and they proved that. Now, just looking at the way the pitch played out, it was